ബീഹാർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ നിയമസഭാ രംഗത്ത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ രംഗത്തെ തീപ്പൊരി നേതാവ് കേന്ദ്രമന്ത്രി ചിരാഗ് പസ്വാൻ റിപ്പോർട്ടർ ടിവിക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ്. पहले चुनाव में लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट है आपका एलजेपी का, अभी क्या होगा? Well, I would want to repeat my strike rate once again. I would want कि लोकसभा में 100% strike rate रहा था और मैं चाहता हूं कि विधानसभा चुनाव में भी एक बार फिर से I'm contesting on 29 seats. My party is contesting on 29 seats. But as alliance also, not only I'm looking at कि मेरी 29 की 29 मैं जीतूं, but also I would want that my alliance also should form government with all-time high number of seats. So I'm hoping that in 2025 we must cross 225 seats. Okay, sir. ये पूरा राज्य में क्या होगा सर? एनडीए कितनी सीट पर जीतेगा? मैं मानता हूं कि एक बड़ी जीत एनडीए की होगी. 225 प्लस सीटों के साथ इस बार हम लोग सरकार बनाएंगे. दिस इज व्हाट आई एम होपिंग. क्या किन किन मुद्दों पर कैंपेन चल रहा है सर? कैंपेन जस्ट डेवलपमेंट. ऑफ कोर्स आई मीन जात पात धर्म मजहब विपक्ष ट्राई ये सारे नैरेटिव सेट करने का, बट देन it's out and out development. The work done by our government in Bihar and through the Prime Minister, the way my Prime Minister has come more than 12 times since the time he has become Prime Minister third time. So development would be the only agenda. Any confusion in CM face, sir? Not at all. Not at all. Opposition पूछ रहा है. That's the kind of narrative they want to place. But then मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं सरकार के बाद. I'm very confident that once again he'll be the chief minister. तेजस्वी बहुत सारा वादा कर रहे हैं सर. वक्फ एक्ट फेंक देगा. वादा करने में कुछ जाता नहीं है because they're not going to come to power. So whatever lie that they want to say, they can say. And also, वक्फ is something passed by the parliament, not by the state. So अगर वो इस बिल को फाड़ के फेंकते भी हैं तो कुछ नहीं. एक घर में एक नौकरी है कि दूसरा वादा. पैसे कहाँ से आएंगे? They don't have the budget. My state doesn't have enough revenue, and they have not mentioned how they're going to increase the revenue. After the election, last question. After the election, आप क्या होगा सर? Well, I'll be a very strong part of केंद्रमंत्री रहे. Of course, I have a responsibility at the center. I'll continue with the same responsibility, but then my party will have a major role to play here. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. All ഇത് തന്നെയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രതികരണമാണ് റിപ്പോർട്ടർ ടിവിക്ക് ചിരാഗ് പസ്വാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പട്നയിൽ നിന്നും വീഡിയോ ജേർണലിസ്റ്റ് കണ്ണൻ പ്രസന്നനൊപ്പം റിപ്പോർട്ടർ ആദിൽ പാലോടിൻ, റിപ്പോർട്ടർ ബീഹാർ.